Good morning, students. Welcome back to chemistry classroom once again. Today I will start from carbon monoxide. So look at your book. Carbon monoxide is a common product of the combustion of carbon-based fuel. Being a poisonous gas, it pollutes air. But at the same time, the gas is used for many industrial purposes too. So as well as carbon monoxide is a poisonous gas, though it is used in industrial purpose in very much. So we will look into both these aspects of the gas here. Poisonous nature of carbon monoxide. Let us see how the gas affects us and how we can get rid of its effects. Concentration of carbon monoxide. The concentration of a substance expected to be present in very small quantities in a mixture is often expressed in a parts per million. This tells us the number of parts of the substance present in 1 million part of the mixture. The concentration of carbon monoxide in air is also expressed in ppm. For example, carbon monoxide level of 100 ppm in a congested city indicates that 100 liters of carbon monoxide is present in 1 million liters of air in the city. So student, you have actually learned this portion only. The concentration of carbon monoxide in air is also expressed by ppm. So what is the meaning of ppm? Actually, for example, कार्बन मोनोक्साइड लेवल ऑफ 100 ppm, मतलब कोई सिटी का अगर कार्बन मोनोक्साइड का लेवल 100 ppm हो रहा है तो इसका मतलब है 100 liters of carbon monoxide is present in 1 million liters of air in that particular city. सिर्फ यहां से लेकर ये दो लाइन याद रखना. The carbon monoxide level in cities generally varies from 5 to 100 ppm. मतलब when the location is varying, like suppose rural life or urban areas, obviously the carbon monoxide level will be varying. How does carbon monoxide affect us? As you know, blood transport oxygen in our body. When we inhale air, the oxygen of air combines with hemoglobin of the blood to form oxyhemoglobin. Oxyhemoglobin runs through blood vessels and gives up its oxygen to the cell, which use it for respiration. So मतलब नॉर्मली ऑक्सीजन जब हम लोग इनहेल करते हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ के ऑक्सी हीमोग्लोबिन फॉर्म करता है. उसके बाद ये सेल में ऑक्सीजन को रिलीज करने के बाद नॉर्मली वो ऑक्सीजन यूज होता है रेस्पिरेशन में. बट कार्बन मोनोक्साइड डिस्प्लेसेस ऑक्सीजन एंड ऑक्सी हीमोग्लोबिन टू फॉर्म कार्बो ऑक्सी हीमोग्लोबिन. मतलब ये ऑलरेडी कार्बन मोनोक्साइड जो है ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन को ऑक्सी हीमोग्लोबिन के अंदर ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के बाद कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन में ट्रांसफर हो जाता है. द एफिनिटी ऑफ कार्बन monoxide for hemoglobin is 325 times greater than that of oxygen. So the displacement takes place easily. The formation of carboxyhemoglobin cuts off oxygen supply to the cell and adverse effects are seen. The severity of the symptoms depends on the amount of carbon monoxide in the blood. Inhaling air with a high carbon monoxide level may even be fatal. So if the level of carbon monoxide is very high in our blood, so it may be fatal. A person may die to asphyxia in and the environment of carbon monoxide. So obviously जब carbon monoxide का level हम लोग का blood में high हो जाएगा, it may be fatal. I mean, it may lead to die also. The situation is also known as asphyxia. So one should not sleep in a closed room heated by a coal fire. तो नॉर्मली घर में ऐसे कोई मतलब कोल फायर बर्न करके हम लोग
बंद दरवाजा खिड़की के अंदर सो नहीं सकते। 100 ppm का लेवल में इफेक्ट्स क्या होता है? हेडेक और डिसओरिएंटेशन। 300 ppm में होता है लॉस ऑफ कॉन्शसनेस, हम लोग मतलब क्या बोले अपना कॉन्शसनेस खो देते हैं। 600 ppm में कोमा में चल जाते हैं और 800 ppm में होता है डेथ। सो ये लिस्ट जो है ये बहुत अच्छे से पढ़ना, याद रखना। नेक्स्ट, क्यूरिंग कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग। Carboxyhemoglobin slowly loses carbon monoxide on being exposed to an excess of oxygen। मतलब जब हम लोगों का शरीर में कार्बोक्सीहीमोग्लोबिन का लेवल बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इफ़ वी गेट मच ऑफ ऑक्सीजन एंड ऑक्सीहीमोग्लोबिन इज अगेन फॉर्म, अगर हम लोग का ब्लड में ऑक्सीहीमोग्लोबिन बहुत ज़्यादा ही बन जाए, सो ए person suffering from carbon monoxide poisoning should be kept on oxygen till he or she recover। तो हम लोग सपोज कार्बन मोनोक्साइड का जो पॉइजनिंग इफेक्ट है उसके हाथ से बच सकते हैं। Industrial uses of carbon monoxide. Carbon monoxide is an industrial gas. Some important uses of this gas are even below. It is used as reducing agent in the metallurgy. It can abstract the oxygen from many metal oxide and set the metal free. So look at here. Basically, मेटल ऑक्साइड से ऑक्सीजन को रिप्लेस करने के लिए कार्बन मोनोऑक्साइड यूज किया जाता है एज ए रिड्यूसिंग एजेंट, मतलब ऑक्सीजन को रिप्लेस कर रहा है। सपोज मेटल ऑक्साइड प्लस कार्बन मोनोऑक्साइड हीट देंगे तो मेटल को फ्री करने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लेगा। फॉर एग्जाम्पल, द मिनरल बॉक्साइट is reduced by carbon monoxide in a blast furnace to give iron। देखो आयरन ऑक्साइड के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाएंगे, आई मीन हीट देंगे, तो फॉर्म होगा आयरन ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सेम है, आयरन ऑक्साइड से अगर हम मेटल ऑक्साइड को मतलब मेटल को फ्री करना है, दोबारा उसके साथ कार्बन मोनोऑक्साइड का रिएक्शन करवाए तो आयरन को फ्री करके कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म कर लिया। Carbon monoxide is also used in metallurgy for the refining of nickel। निकेल का रिफाइनिंग के काम में कार्बन मोनोऑक्साइड गैस यूज किया जाता है। It is used on a large scale in the industrial preparation of several organic compounds such as methanol, acetic acid, hydrocarbons and the phosgene used in the synthesis of some polymers। सो यूज तुम लोगों को याद करना है। नॉर्मली एज ए इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट बेसिकली कार्बन मोनोऑक्साइड इज यूज्ड फॉर प्रिपेयर मिथानॉल, एसिटिक एसिड मीन्स विनेगर, हाइड्रोकार्बन्स, सेम है फॉस्जीन। फॉस्जीन का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखा है COCl2, ये याद रखना है। तो स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड व्हाट आई हैव डिस्कस्ड इन दिस वीडियो। सो फॉर टुडे अप टू दिस पोर्शन।